से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत एक गणराज्य दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विविधता के लिए जाना जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषा और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा है और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। अपने भारत देश में अनेक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले एक राज्य था। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से कश्मीर घाटी के लिए जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, जम्मू और कश्मीर, जिनमें से प्रत्येक में कई झीलें शामिल हैं। Pahalgam is a beautiful place from Jammu and Kashmir, but in Jammu and Kashmir, a memorial in memory of the 26 victims of the April 22nd, a tragic terror attack at Baisaran near Pahalgam in South Kashmir's Anantnag district. भारत ने 22 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए 6 और 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उनमें बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, कोटली ये ठिकान शामिल थे। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के तीनों सशस्त्र दलों की प्रतिभाशाली महिलाओं ने अपना कर्तृत्व सिद्ध किया। Vyomika means the daughter of the sky. She had a childhood dream of flying. Any guesses? Who is she? Vyomika Singh is a decorated helicopter pilot in the Indian Air Force IAF. Vyomika's hometown is Uttar Pradesh, Lucknow in India. She joined the National Cadet Corps NCC and later completed the engineering degree before joining the IAF. She gained prominence for her leadership and flying skills, particularly in the high-altitude rescue operations and challenging terrains like Jammu and Kashmir and Northeast India. She has been also known for being the first in her family to join the armed forces. She has been involved in numerous high-strike rescue and relief operations, including one in Arunachal Pradesh, where she led a rescue mission in November 2020, as well as she jointly led the media briefing on Operation Sindoor, a targeted strike by India in response to an attack in Pahalgam. So I salute the Wing Commander Vyomika Singh. Now meet Sophia Qureshi. Sophia Qureshi is a senior officer in the Indian Army, currently holding the rank of the colonel. She was born in Vadodara, Gujarat. She is notable for being the first woman to lead an Indian contingent at United Nations Command's peacekeeping mission force. She took a lead in a battles Indian-Pakistan conflicts 2025. It is known as the Operation Sindoor. For the first the Indian Navy had appointed Commander Prerna Devasthali as the first woman officer in the Navy, has to command the Indian naval warship. She was born and raised in Mumbai, Maharashtra. She holds the master degree of psychology and joined the Navy in 2009. Commander Prerna plays a key role in Operation Sindoor to its careful planning to neutralize target without harming any civilians. She highlighted the careful planning that ensures the Operation Sindoor successfully. We salute these 3 ladies.